So the particle P is released from rest at A. The particle P collides with particle Q of mass 0 kg, which is at rest at B. तो ये इधर पड़ा हुआ था particle Q, ठीक है, it's here, उससे collide करता है और उसका mass 0.1 kg दिया हुआ. Immediately after collision, the speed of P is 4 meters per second. तो ये जो पिछला वाला है उसकी स्पीड कम हो जाती है 4 meters per second और in the direction of BC आगे ही जाता है. You assume that P is moving horizontally when it collides with Q. Show that the speed of Q immediately after collision is 10 meters per second. So law of conservation of momentum chalega. So momentum before collision, mass of particle P, initial velocity of particle P plus mass of particle Q. Initial velocity of Q is 0 because it was just lying there. अभी वो निकाल लेते हैं, वो ऊपर से गिरा है. Smooth track है, so it has lost height 1.8 meters. इसने energy lose की है, potential energy, वो gain in kinetic हो जाएगा, MPVP plus MQVQ. So for the purpose के initial velocity P की पता लगे, there is no other, because there is no distance known, but you know that it's fallen 1.8 meters and it's a smooth surface. So you could say for P, you could say loss of potential energy is the equivalent to the gain in kinetic right before impact. So loss of potential is mgh, g being 10, height being 1.8, and gain in kinetic is half mv square. M is 0.5 times v squared. So 0.5 cancels. 18 gets double, 36. V ka square root, V comes out as 6. I could have used the same line ताकि मुझे space के issues ना आए exam में. 6 meters per second is the speed of impact. All we do now is plug in values to show कि वो 10 है. How do we do that? Mass of P is 0.5. Velocity of P is 6. Mass of Q is 0.1. Velocity was 0. And mass of P 0.5 times 0. They said okay, it now moves, you have to, the speed of P is 4. So that's 4 plus Q की जो mass है वो है 0.1 और Q का velocity नहीं पता V है. So that's 3.5 into 6 is 3, 0.5 into 4 is 2, equals 0.1 V. Therefore, V comes out as 10 meters per second. So that way we are able to show that the velocity is 10. Good job, Mahat. Part B, 4 marks के लिए. Let's stop the recording. You try this. So in this it says when Q reaches C, it collides with a particle R of mass 0.4 kg. तो Q की जो स्पीड थी वो हमने जब निकाली 10 है और ये स्मूथ सरफेस है, तो C पे जाके which is 7 meters कवर करके it hits the particle R of mass 0.4 kg और वो रेस्ट पे है at C. So let's imagine this. इसका है 0.4 mass और इसको Q आके हिट कर रहा है इस mass R को और Q की स्पीड थी 10 और स्मूथ सरफेस है, so it's not losing any speed और इसकी इनिशियल 0 है, तो upon impact इसकी 10 है. The two particles coalesce, so they become one unit. So law of conservation of momentum applies. Then it says the combined particle comes instantaneous to rest at F. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ऊपर height some F जगह है यहाँ पे, some place F, where they come to rest. Now what was F? Did they talk about F? And did they say anything about F? The section CFE is a straight line. That's all they said. कुछ और नहीं बताया.
So we don't know how much distance it is. It could be x. अगर वो x है तो you could say the gain in height is x sine of theta. That's the potential energy gained after the loss in kinetic. You could use that. So nor when so it says change in speed as a combined particle leaves C, nor when it, you should assume there's no instantaneous change, nor when it passes through C, that again as it returns down the slope. तो वापस भी आ रहा है तो कोई instantaneous change नहीं है. Given that the distance CF is 0.4 meters, ये खुद बता दिया, find the value of theta. So आपको let's do this. So जो ये particle Q है, mass of Q into the impact's velocity of Q times mass of R times initial velocity of R, जो कि 0 है, is equal to the combined mass. They coalesce and they become one thing. और इनकी कोई immediate speed होती है शुरू में. तो mass of initial velocity of Q was 10, mass of Q was 0.1. So let's have that 0.1. और आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 10 से, प्लस mass of R और initial 0 हो गया. तो 0.1 plus mass of R is 0.4 into V. So this is 1 equals 0.5 V. Therefore, V's value comes out as 1 divided by 0.5, which is 2 meters per second. अब 2 meters per second से इसने rise करना है this slope. ये थीटा है और ये f है, ये c है और हमने कहा ये x है, तो ये we call this x sin theta. तो we could say loss in kinetic energy equals gain in potential energy को हम apply कर सकते हैं. So the loss in kinetic is 1 over 2. Mass is the combined one, 0.5. Velocity was 2. Equals gain in potential, ऊपर जाके रुक रहा था. तो हमारे पास आ गया था mass 0.5 g10 into height h. h को आप x sin theta भी बोल सकते हो, 0.4 sin theta. तो x की, क्योंकि CF की वैल्यू जो है उन्होंने 0.4 दी हुई है, तो that's 0.4 sin of theta. तो इसमें सिंप्लीफिकेशन, सादा सिंप्लीफिकेशन होगी. 0.5 कट गया, ये 2 ने इसकी पावर उड़ा दी, 10 उधर चला गया. 0.2 डिवाइडेड बाय 10 उधर गया तो 0.2 हो गया, इज इक्वल टू 0.4 साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, और साइन इनवर्स हाफ करके 30 निकाल लिया आपने एंगल. साइन थीटा इक्वल 0.5, साइन इनवर्स of 0.5 is theta, which comes out as 30 degrees. तो ये हमारे पास आ गया 30 degrees. You got that? Because find the distance from B at which P collides with the combined particle. तो ऊपर से ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे आ रहा है, तो ये सारी टाइम जर्नी पता होनी चाहिए, क्योंकि उसने कहा फाइंड. तो हुआ क्या था, ए आया, बी को हिट किया, बी पे जो पड़ा हुआ था क्यू वो आगे गया, आर को हिट किया, वो एक पार्टिकल बन गया कंबाइंड पार्टिकल, वो ऊपर गया एफ तक, फिर वहां से नीचे आना है. इस सारे प्रोसेस में ए भी आगे जा रहा है, तो हमें ये सारी टाइम ड्यूरेशंस पता होनी जरूरी थी. सो लेट्स जस्ट गैदर ऑल द टाइम वैल्यूज अप फर्स्ट. टाइम ड्यूरेशन इसलिए पता होनी है क्योंकि डिस्टेंस की बात उसने पूछी है कि जी कितना, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी एट विच पी collides with the combined particle. तो from B is this point onwards. तो यहां पे वो हिट करके इसकी कोई सर्टेन स्पीड होगी थी. अच्छा, एनीवेज हमारे पास जर्नीज हैं B to C की. लेट्स लेबल दोस जर्नीज ताकि पता चले. सो Q moves from B to C. टाइम चाहिए हमें, और डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर स्पीड करेंगे. डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है BC का, विच इज 7.
और इसकी जो स्पीड थी वो थी 10, तो 7 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज द टाइम, 0.7 सेकेंड्स इसको लगे। और फर्दर इसको कितने लगे? अच्छा, अब जो दूसरा है ये कांस्टेंट स्पीड का नहीं था, ये सी से एफ जो मूवमेंट है ये डिसेलरेशन है। तो इसके लिए हमें टाइम निकालने के लिए जो है कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई इंक्लाइन पे व्हेन नो स्मूथ सरफेस है, व्हेन नो अदर फोर्स एक्ट्स, तो डिसेलरेशन है। आपको पता है जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0.4 मीटर्स। इनिशियल स्पीड इसकी यहाँ पे 10 है, फाइनल स्पीड इसकी जो है वो 0 है। और एक 10 इसलिए थी, ओ 2, क्योंकि वो नीचे, वेरी गुड, कंबाइंड हो गया था। थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग दैट, कि कंबाइंड मास हो गया था और इनिशियल 2 थी। तो हमें टी चाहिए, टाइम में इंटरेस्टेड है हम। तो इधर वो जो रेयरली यूज्ड फॉर्मूला है ना, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन उसमें डिसेलरेशन चाहिए। वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s करके हमें डिसेलरेशन निकल भी आ सकती है। टाइम उसके अलावा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकालें, वो भी ज़रा एक मेहनत का काम है। तो अ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो फिर हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। डिसेलरेशन वैसे अगर निकालें डायरेक्ट तो वो भी निकाली जा सकती है कि वेट का कंपोनेंट जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है और कोई भी ड्राइविंग फोर्स अदरवाइज नहीं है। तो इसका जो कंबाइंड मास था वो अगर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम ए, तो एम और एम कट जाता है, जीरो ड्राइविंग फोर्स है, फॉरवर्ड फोर्स कोई नहीं है, बैकवर्ड फोर्स ये सारी, इसलिए -10 साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, साइन थीटा वाज हाफ, 0.5। तो हमने अगर उसको 0.5 को रिप्लेस कर दे तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास इसकी डिसेलरेशन आ रही है। तो उसमें हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेते हैं। v 0 इनिशियल वेलोसिटी 2 जैसे तुमने बताई, एक्सेलरेशन -5 टाइम्स t, तो ये 2/5 आ गया टाइम, विच कम्स आउट एज 0.4 सेकेंड्स। तो 0.4 सेकेंड्स ये ऊपर गया और 0.4 सेकेंड्स के नीचे आया, तो दैट्स अ नेट एडिशनल 0.8 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम इसने 0.8 सेकेंड्स लगाया ऑन द स्लोप। और जब वापस आया है तो इसकी स्पीड वही है 2 मीटर्स पर सेकेंड एज इट मूव्स ऑन दैट फ्लैट सरफेस टुवर्ड्स बी। अब हमने देखना यह है कि जो दूसरा पार्टिकल था पी, वो इतने अरसे में कितना मूव कर गया। उसने मूव किया था पॉइंट बी से आगे। पॉइंट बी से कितने टाइम के लिए मूव किया उसने? टाइम जो मूव किया है वो 0.8 प्लस दैट इनिशियल फेज ऑफ 0.7 विच मेक्स 1.5 सेकेंड्स उसने मूव किया। तो किस स्पीड से मूव किया? उसकी जो इम्पैक्ट स्पीड थी वो दी हुई थी कि जी हिट करने के बाद उसकी यहाँ पे स्पीड उन्होंने बताई थी कि 4 हो जाती है। 4 ये पार्टिकल पी की स्पीड 4 मीटर्स पर सेकेंड हो जाती है। तो हमने कहा जी अच्छा चल निकाल लेते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसका। मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ, बी के बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पी। So distance traveled by the object P is the speed 4 times the total time 4.5 which comes out as 6 meters. अच्छा जी, अब हमें ये पता चल गया कि ये 6 मीटर्स आगे जा चुका है और ये जो C पॉइंट है 1 मीटर का गैप रह गया उसका, 1 मीटर अवे। इट इज 1 मीटर अवे। अब इनका जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल कंबाइंड मास एंड दिस मास इज 1 मीटर। और हमने अब देखना है कि ये कितनी देर में ये 1 मीटर कवर करते हैं। तो ये 1 मीटर कवर कैसे करेंगे? इसका स्पीड है 4, जो भी टाइम लगाएगा प्लस द स्पीड ऑफ द रिटर्निंग ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स टी इज इक्वल टू 1। तो ये 6t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 1/6। इससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे स्पीड इंटू टाइम करके। पी पार्टिकल का स्पीड पी पार्टिकल की थी 4, टाइम था पी पार्टिकल का 1/6। ये आ गया हमारे पास 2/3 मीटर्स।
तो ये 2/3 मीटर और फर्दर आगे ट्रैवल किया तब जाके ये हिट किए दोबारा. तो टोटल डिस्टेंस अवे फ्रॉम बी इज 6 plus 2/3 meters. That's the total distance when they hit each. Okay, so a car of mass 1200 kg is traveling along a straight horizontal road. The powers of the car's engine is constant and working at 16 kilowatt. There is a constant resistance to motion of 500 newtons. Find the acceleration of the car at the instant when the speed is 20. So power is driving force times velocity. Power is constant at 16, 10 power 3. Driving force is unknown. The velocity given is 20. So when you divide on the other side, the driving force comes out as 16,000 over 20, and that's 800 Newton. And they wanted the acceleration. It's a horizontal road pe chal rahi hai, and the friction is 500 given. MA कर दिया, F net equals MA, mass times acceleration. आपके पास 300 divided by 1200 आ गया. The acceleration की value came out as 1/4, which is 0.25 meters per second square. In the second part, assuming the power and the resistance remains unchanged, find the steady speed. So the driving force is when it's talking about steady speed, तो driving force जो है वो equal हो जाती है to the force of friction or the resistive force, which is going to be 500 Newton. Because जब steady speed है, acceleration 0, F net 0, तो horizontal surface पे driving force is the same as friction. So 16,000 equals driving force 500 times the velocity. That's why you got 32 meters per second. Then it says the car comes to the bottom of a straight hill like that, of length 316 meters. So that's the hill's length, not the height, but the length, 316 meters. Then it says, and there's a ratio of the sine of the angle, sine theta is 1/60. The power remains constant at 16 kilowatts, but the magnitude of resistance is no longer constant and changes such that the work done against resistance force in ascending the hill is this much. The time taken to ascend the hill is 15 seconds. So the power times time gets you the value for the work done by the engine or work done by the car. So work done by the engine minus work done against resistive force, which they have given as 128,400 is equal to change in kinetic plus change in potential. So given that the car is traveling at a speed of 20 at the bottom, find its speed at the top. So half into, so this literally becomes a one-liner, 1200. The final velocity is unknown, top pe, bottom pe 20 20 square, plus mgh. Now mass is the change in potential is 316 sine theta. So m is the 1200, g is 10 times sine theta, 316 sine theta, 316 times 1/60. Now the thing is कि यहाँ पे अभी work done by driving force का issue है, वो बड़ा easily resolve हो गया. That is 16,000 multiplied by the time, which was 15 seconds, minus 12840. So this becomes the 6-mark question is reduced to like a very simple thing. If the approach is clear, तो ये असल में मुफ्त के मार्क्स होते हैं क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आपको सारे यूनिट्स का पता हो कि हाउ डू ऑल दीज पीसेस कम टुगेदर. ओके, अंडरस्टूड. ये कैसे हमने निकाला, मेगा इक्वेशन से निकाला है. दैट्स हाउ वी डिड दिस.
Okay, so two particles P and Q of masses 0.2 kg and 0.25 kg are connected light inextensible string that passes over a smooth fixed pulley. Particle P is on an inclined plane at an angle of 30 to the horizontal particle Q hangs below the pulley. 3 points A, B, C lie on a line of greatest slope of the plane with AB 0.8, BC equals 1.2. Particle P is released from rest at A with a string taut and slides down the plane. So this guy slides down the plane. During the motion of P from A to C, Q does not reach the pulley. The part of the plane from A to B is rough and with coefficient of friction 0.3 between the plane and the particle. The part of the plane from B to C is smooth. Find the acceleration of P between A and B. So first things first, the component resolution and all those vertical components, we need that perpendicular. Why? Because we need the friction, we need the weight component down the slope. We also need to cater for the tensions in the strings. So the tensions are always acting away from objects. So the tension niche wala, because Q is going to go up. So for P, you'll have the weight acting down, which is 20 mg sine 30. It's always the sine component acting down. What's acting against the motion? Two things. One is the friction. Friction is mu r, because ये पहला part जो है वो A से B rough था. Friction was 0. Coefficient friction was 0.3 mg sine theta, which is mg cos theta, which is cos 30. And what else is subtracted? The weight component के अलावा tension is subtracted. Tension is upwards, and this thing is equal to ma. That's one equation. The other equation is simply tension. That's for Q. Tension minus the weight 2.5 mg equals 0.25 a. ये तुम्हारे पास दूसरी equation आ गई. So you can just simultaneously solve these, and you should be able to get the value for the acceleration. So t ki jagah, I would say, okay, why don't you just plug in 2.5 plus 0.25a? I think that should be a good plug-in to do. और उसको simplify करो, solve करो. Hopefully this is what you should get. Let's have a quick look at the marking scheme. It also said the same. The weight, two forces बनाई थी, weight component minus friction minus tension equals ma. Tension minus weight component equals 0.25a, or weight minus friction. अब they use F now, so that's like not a bad approach. और tension की जगह T लिख दिया, so yeah, it's not a bad approach. बाद में F को replace किया इन्होंने end में, तो ये भी ठीक है. हमने थोड़ा पहले रिप्लेस कर दिया, उससे स्टाइल ऑफ सोल्यूशन में कोई शायद में हमें लेंथ में फ़र्क आ जाता है, कॉम्प्लिकेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि आप इस पूरे की जगह एफ लिख देते हैं अगर, तो सिंपलिस्टिक हो जाता है. दैट कैन बी समथिंग जिसको देखा जा सकता है. वी कैन सी कि भाई इसको बाद में आप रिप्लेस कर दें. सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट. दैट ठीक हो गया. माद, यस, यू गॉट दिस.